ओके, सो आज बेसिकली जो मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनी के अंदर बहुत सारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं या इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। तो अभी फर्स्ट इंटरव्यू जो है वो एआई के द्वारा लिया जा रहा है। तो एआई का इंटरव्यू किस टाइप का होता है उसका एक मैं मॉक डेमो दिखा था। एक्चुअली एक रियल है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इसमें लॉक भी हो जाऊँ, बट एक मॉक इंटरव्यू का यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। जैसे अभी आज मेरा इंटरव्यू है, आपको एक मेल आता है ऑफिशियली, जिस मेल के थ्रू आपको काम करना होता है। और इस मेल के अंदर सारी डिटेल दी गई है कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। ये मेल आने के बाद आपको इसको पढ़ना है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, जैसे कि 8 आवर्स के अंदर आपको जो है उसे कंप्लीट करना होता है। भाई मुझे मेल आया है प्रॉपरली यहाँ पे आज 8:30 बजे से मुझे 10:30 से पहले इस इंटरव्यू को देना होता है। ये सारा इंटरव्यू जो एआई के द्वारा लिया जाता है, तो जैसे देख पा रहे हो कि फुल स्टैक इंजीनियर एआई इंटरव्यू फॉर पर्टिकुलर सिस्टम। तो सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि क्या क्या डिटेल्स है। ज्वाइन इंटरव्यू आप लेके स्टार्ट कर सकते हो, कभी अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो आप रीशेड्यूल कर सकते हो। सारे इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करते तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि क्रोम और एजी चाहिए, ठीक है, तो आप पूरे गाइडलाइन जो है उसके रिलेटेड वो सारे यहाँ से आप रीड कर सकते हो। जैसे कि प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया है एआई बेस इंटरव्यू के लिए, आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। ब्राउजर कंपेटिबिलिटी चाहिए, स्क्रीन मोड अच्छा चाहिए, ऑडियो प्रॉपरली चाहिए, टेक्निकल स्टेटअप चाहिए, या इंटरव्यू के लिए एनवायरनमेंट किस टाइप का चाहिए, कैमरा वगैरह एक अच्छा प्लेस वगैरह चाहिए। तो बेसिक गाइडलाइन है जो इसको आप आराम से रीड कर सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे एक्चुअल इंटरव्यू कनेक्ट करने से पहले यू कैन गिव दिस मॉक काइंड ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है, तुम्हें अभी वो एक्चुअली मॉक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करके देख सकता हूँ, मैं करता हूँ। हो सकता है कि ये मुझे लॉक कर दे, बट फिर भी आई एम ट्राइंग कि एक्चुअल आप जब फर्स्ट टाइम देखो कि हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो सके, बट स्टूडेंट के लिए मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। लेट मी डू इट। मैं स्टार्ट करता हूँ इस मॉक इंटरव्यू को। तो सबसे पहले आपको ऐसा एक प्रोसेस आ जाएगा जिसमें आपको लाइट वगैरह ऑन करके रखो प्रॉपर्ली। ठीक है, तो अभी लाइट वगैरह ऑन हुआ है, तो एक क्लियर फेस रखना है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं दिखाई दे रहा, बट लेट मी ट्राई टू सी दी। या अभी एक क्लियर व्यू है अपने पास। सो नाउ अभी हम क्या करेंगे। सो सारे परमिशंस वगैरह तुम्हें ऑन करने होंगे। बैकग्राउंड प्लेन रखा तो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, बट लेट मी लाइक इट्स ओके नाउ, इट इज प्रॉपर्ली फाइन है। तो माइक भी प्रॉपर्ली चालू है। ओके, परमिशन उसे मिला नहीं है, अलाउ एक्सेस फॉर दिस टाइम करना है। ये फर्स्ट टाइम हो सकता है आपके साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स हो, और इसे भी तुम्हें अलाउ कर लेना। ये सारे परमिशन प्रॉपर्ली If you सेटेड है, can तो hear अभी me, एक please join बैकग्राउंड the प्रॉपर चेक interview. हुआ है। नाउ आई कैन ज्वाइन दिस मॉक इंटरव्यूज, एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। और एक चीज याद रखो, अभी मैं ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका एक आंसर हम देंगे, ताकि जस्ट हैबिट हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी ट्राई नाउ। सिर्फ ऑब्जर्व करना कि हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अलाउ कर लेता हूं मैं इसे। कंटिन्यू। This interview is being recorded. By continuing this interview, your consequence will be recorded. I agree the terms and conditions. ओके, ये रिकॉर्ड किया जा सकता है। मॉक इंटरव्यू तो मैंने बोला, लेट्स मी चेक दिस। Hi, I'm Avya, and I will be conducting your interview today. This will be a conversational interview where I will ask about your experiences and skills. If you need any clarification at any point, feel free to ask. Here's how it works. I will read each question aloud, and it will also appear on your screen with a time limit to answer. After saving your answer, you will automatically move to the next question. This is a proctored interview. Switching tabs, exiting full screen, or any form of cheating or misconduct will lead to disqualification. If the interview closes unexpectedly, you can resume it using the same link. For any issues during the interview, use the chat button at the bottom right.
ओके, अभी बेसिक उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताए, नाउ विल गो फॉर द शेयर स्क्रीन एंटायर स्क्रीन। अभी ये स्क्रीन तो मैं शेयर कर रहा, बट अगर हो सकता है कि अगर मेरा कुछ एक्स्ट्रा टैब या कुछ चालू है तो वो मुझे लॉक कर दे, बट आपको प्रॉपर प्रोसेस तो समझ में आ गया। लेट मी शेयर इट नाउ। ऑडियो ऑन करना है शेयर करते समय, याद रखो। देन स्टार्ट इंटरव्यूज। Hi, I'm Avya, and I'll be conducting the interview today. How are you doing? आई एम गुड, थैंक यू। Thanks for joining today. Can you walk me through the main points of your resume and highlight the experiences that you think are most relevant for this role? Yes, so I'm a Java full stack developer, 9+ year experience. So I have a good knowledge on core Java, advanced Java. Have done developed many Spring Boot REST API. Working as a backend developer. So I have the front end skill as well of HTML, CSS, JavaScript, and the React as a front end library. In the database, I worked on MongoDB, NoSQL, and the PostgreSQL as a normal database, relational database. So I'm working as a full stack in Hummingbird technology in current companies. You mentioned working with Spring Boot REST APIs and databases like MongoDB and PostgreSQL. Can you explain a project where you integrated these technologies and the challenges you faced? Yeah, so currently I'm working on Hummingbird technology. They have one project called a recurring deposit system, which is a finance-based domain, where I need to create a user accounts and I need to maintain their passbook entry as well. So for creating accounts and maintaining a passbook entry, I have used a PostgreSQL database. I have designed the proper structure. Their manual work, whichever the manual work, I have made accordingly the table structure in the backend. And to access the backend data in the React directly, so I use the Spring Boot REST API to deal connect to the backend and generate a REST secure API. And in front end, we use a React for creating accounts or for getting the user inputs and they're showing proper data, how much entry they have done, when the account is get matured. And while doing this, I have faced the challenge to maintain that there is transaction, because if the multiple transaction are happen simultaneously, there may be some collision occurs. So that kind of transaction was also handled with the help of at transaction annotation. That we have managed the database accordingly properly. So use a TCL command accordingly whenever there is a needed. You talked about handling transactions with Spring Boot annotations to avoid collisions. Can you describe how you implemented this transaction management in your project? Yeah, so in the database, I use the transaction based, because while doing in passbook entry or some kind of amount is also getting closed in between as well. So whenever the first transaction is happened, then there should be another transaction should be wait to until that transaction completed. So for that we need to use the begin commands and log that particular tables, and until and unless that all the process of the first part is getting completed, second transaction should be get waited. So in the database structure we have maintained, and in repository we written all this kind of transaction, so that for whenever you call that API for declare closing RD or doing passbook entry, so automatically all the transactions will be get begins, and until that process will be completed, other transactions should be get quit. You gave a good overview of transaction management. Can you specify which Spring Boot annotation you use to control the transaction boundaries in your code? So for the transaction, I use at the rate transaction controllers, and there is a begin end is a part, and in between the we need to write the query. For writing the query, we need to write. We cannot use our JPA built-in queries. We need to write
some custom queries that there are at the rate query annotations where we can write value is equal to our customized field queries, and then native query is equal to our, and we customize the methods so that all the custom method will be get generated, and accordingly we in service layer we call that API, and in controller we call that methods, so that our API will be get becomes as per the things our query we have written. You mentioned using add direct transaction controllers and custom queries. Could you clarify if you meant that transactional annotation for transactions and explain how you combined it with your custom queries? Yeah, for writing custom queries, is the JPA is a built-in CRUD repository provided called insert, update, delete, select, find, and find all methods. But whenever we need some kind of join queries, so that should not be performed by the JPA. So for that, we need to use a customized query. And for maintaining the transaction, we use the address transaction controllers in the repository. You mentioned using address transaction controls in the repository for transactions. Could you specify if this refers to the add transactional annotation in Spring Boot and describe where exactly you apply it in your code? Okay, so I'm not aware exactly the things that I'm used. I use only the basic transaction annotations. Thanks for clarifying your use of basic transaction annotations. To understand your role better, can you describe your key responsibilities and contributions at Hummingbird Technology beyond the project you mentioned? My job is to be handle the backend roles. Mostly, I need to talk with them, communication with the client, and whichever the client requirement is have that accordingly I can maintain the database structures, and then accordingly I need to design a Spring Boot REST API, and to handle the front end junior teams or mentor them whenever they have problems to solve their problems, whichever the flow problem they are having. So accordingly, I can clarify the flow, and whenever the bug is there, to try to fix that bugs and optimize the systems as much as possible. You mentioned mentoring junior front-end teams. Can you share how you approach mentoring and an example of a challenge you helped a junior developer overcome? Yeah, so basically, as I say that we have the front end developer team. So whenever there are problems like while calling APIs, they may not aware about what kind of response they need to pass, or sometimes they have used some wrong methods instead of get post method. They have used some other methods as well. So we need to clarify them whenever they have problem with the JSON response. They are not able to pass proper request, or in some case they are not able to pass the data from the parent to the child. It's component to component data traveling. So whenever there is some kind of advanced thing they needed, because they can easily generate the UI, but for calling API and doing properly traveling the data. So whenever they have problems, we can fix that problem accordingly to properly clarification. Thank you so much for taking the time to chat with me today. I've really enjoyed learning more about you and your experiences. Do you have feedback? Yeah, it's a quite great experience to deal with an AI interview. So thank you for, and all the questions are good and have enjoyed a lot. Thank you for completing the interview. That concludes our discussion for today. I appreciate your time and all the detailed responses you provided. We will get back to you soon. Have a great day. ओके, सो देखा तुमने कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तुमने एक ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो क्वेश्चन जो है
जो टॉपिक पे तुम आंसर देते हो, ये रियल इंटरव्यू में भी यही होता है कि जो भी टॉपिक तुमने चूज किया उसके अंदर आप मास्टर होना चाहिए। अभी गलती से मैंने वो ट्रांजैक्शन का यूज किया वर्ड, तो वो घुमा फिरा के मुझे ट्रांजैक्शन पे ही लेके जा रहे थे। तो हमेशा मेक श्योर करो जिस टॉपिक पे आपको ज्यादा कंट्रोलर है या ज्यादा आप उस पे कॉन्फिडेंस हो, तो उसी टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो, सो दैट आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा ट्राई रहता है हमेशा, और होप आपको लाइक आया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ये शेयर करो, और आप अच्छे से देख सकते हो कि मैं कितना रियलिस्टिक और लाइव सारी चीज़ें आपके लिए लाता हूँ। तो आपका भी वो फर्ज बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टूडेंट के साथ पे स्टार्ट लर्निंग के लिए प्रोसेस ही मेरा हमेशा ट्राई रहता है, और इतना रिस्क मैं कभी लेता नहीं, बट आपके लिए मैं लेता हूँ, तो उसका भी मुझे कुछ फीडबैक मिलना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे।